Morning, children. As we were doing methods of commercial food preservation, we'll continue with the topic as few points are still left for discussion. So open your books, page number 133. I think till 7th point we did it yesterday, and we'll start from 8th point. So open your books, page number 133. 8th point is marmalade. It is more of a jelly than jam, containing fruit pieces or peel pieces suspended uniformly throughout the mass. In jelly and jam, what all we required, and in marmalade we'll be requiring, it is more of a jelly than jam, because jelly is a transparent structure, but jam is little thick, and it is mainly made by the pulp of the fruit. Containing in this marmalade, fruit pieces and peels are also used for making marmalade, and these fruit pieces, peels and fruit pieces are uniformly suspended through the मास में उनकी क्वांटिटी जो रहती है बल्क में, उसमें अच्छे से उसको मिक्स कर लिया जाता है. This, like jam and jelly, is prepared from citrus fruit, and this is mainly prepared from citrus fruits. Then preserves. Here the fruit is preserved in a high concentration of sugar syrup. Basically, for preservation, I told you we also use sugar and salt. So here the fruit is preserved in high concentration of sugar syrup. The concentration of sugar is very high. Preserves are made from whole, halved or quartered fruits only, and here the preserves which is being used for the preservation part, it is taken whole, as a whole fruit, half fruit or quartered fruit. Preserves rarely have any added acids, and in this preserves we rarely add any acids because they contain the natural acidity. They already contain the natural acid in it, that's why, of the fruits. Acids used, if any, in the making of preserves serves the purpose of converting the natural cane sugar of the fruit into the non-crystalline forms. If ever acid is used, it is mainly used for the conversion of natural cane sugar of the fruit into non-crystalline forms. Then pectin extraction we discussed yesterday. I hope is clear to you all. The syrup. Syrup are beverages comprising of sugar, color, essence and preservatives. So what all we add in the syrup? It is mainly a beverage, and it is mainly made up of sugar, color, essence and preservatives. The fruit products order, however, requires that a fruit syrup must contain at least 25% of fruit juice. Suppose we are making a syrup of any fruit, it has to be that 25% of the fruit juice fruit juice should be present, mentioned in the label. Some labels declare the presence of synthetic or artificial flavors used as syrup. Mainly the syrups which we buy from the market, this is not necessarily that they are having the syrup is whatever they have mentioned on the label, whether 25% they have taken it or not, because on the place of sugar they also use artificial flavors, or the synthetic flavors also can also be used. These have a high concentration of sugar and they do not spoil easily, because these artificial flavors are used because they have a high concentration of sugar and they do not spoil easily. That's why they are being used, and they are usually clear and contain very little acid, and also that they are very clear and they do not contain acid. Then squashes. Squashes, it is also a beverage quite akin to syrup, very similar to syrups. It contains about 25 to 30% fruit juice. In squashes, it contains about 25 to 35% squashes fruit juice, 35 to 50% sugar. In that we add 35 to 50% sugar and 1.5% acid, usually citric acid. We add citric acid because it gives a nice flavor and taste also. When fruit pulp is also incorporated in the squashes, then heat treatment is necessary to preserve it. In squashes, first be heated, because this incorporation of heat is required so that it can be kept for a longer period of time.
Chemical preservatives may also be used as the sugar content is not high enough to act as preservatives. Here, though sugar act as a preservative, but we have to add acid or chemical preservatives, so that because the sugar content of the squashes are not very high, so we add preservatives also, so that it may be remain for a longer period of time. Then barley water. Barley water, this is usually prepared from orange and lemon juice. Barley water, the preparation is quite similar to squash. It is very much likely to be prepared like squashes. First they have heated, then they have prepared, they are being made. But here barley extract is used along with the fruit juice. Here fruit juice along with the barley extract are used. It is considered very beneficial for children and convulsing patients. Convulsing patients who are taken for a long time to recover. Very long time treatment is there, and they've been taken for a long time treatment. Then another beverages are cordial. Cordial involves the process of preservation, sedimentation, symphoning and decanting or filtering process. So in cordial, it's a long process. First it is undergoes with the process of preservation, then sedimentation. It is kept for a for a for a much longer time, so that it can be sedimentation. सेडिमेंटेशन मतलब वो आराम से पूरा उसका सेडिमेंट्स जो होता है, जो सॉलिड पार्ट है वो बैठ जाता है, और उसका जो क्लियर पार्ट है उसको हम सिम्फनाइजिंग करते हैं, मशीन्स के थ्रू सिम्फनाइजिंग करके फिल्टर पेपर के थ्रू निकालते हैं, और देन यू गेट व्हाट इज़ कॉर्डियल क्लियर सोल्यूशन. The fruit juice is preserved and allowed to stand for some time. The pulp settles down as a sediment. I told you the solid part settles down and the clear liquid above is siphoned off. उसको मशीन के थ्रू सिम्फन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सिम्फनाइज करते हैं, और उसके बाद एंड देन फिल्टर, उसको फिल्टर कर दिया जाता है. प्रेस्ड बिफोर देन फिल्टर प्रेस्ड बिफोर बीइंग पोर्ड इनटू बॉटल. फिल्टर करके उसके बाद उसको बॉटल में पोर किया जाता है. इट कंटेन्स 30 to 40% शुगर, 1.5 to 2.3% एसिड सिट्रिक एसिड एंड अबाउट 33% फ्रूट जूस. इसमें 33% फ्रूट जूस होता है, 30 to 40% शुगर होता है, और 1.9% एसिड डालते हैं, सिट्रिक एसिड. ठीक है. देन सिदार इज़ एप्पल जूस after alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation, you kept it for when you keep any fruit for a longer period of time, it becomes fermented, and after that it is used for the purpose. Perry is pear juice after alcoholic fermentation. पेयर को भी बहुत दिन तक रखते हैं, जब फर्मेंटेशन हो जाता है तब उसका जूस बनाते हैं. एंड वाइन इज़ ग्रेप जूस आफ्टर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. वाइन आपको पता है, ग्रेप्स को आप बहुत दिन तक छोड़ देते हैं, जब वो फर्मेंट हो जाते हैं तब उनके जूस बनाते हैं. सिदार कंटेन्स अबाउट 22 to 6% अल्कोहल. जो एप्पल साइडर है, आपको पता है आजकल एप्पल साइडर मार्केट में भी मिलता है, और वो जो है उसमें कितना होता है अल्कोहल, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 6%. Then candied fruit is dried preserved पेठा, जिंजर, पपाया, करौंदा एंड सिट्रस पील्स आर सम ऑफ द पॉपुलर कैंडीज़. ये सारे पॉपुलर कैंडीज़ हैं जिनको कि हम कैंडी के रूप में बनाते हैं. और कैसे करते हैं, इन वन ऑफ द प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है. वैसे भी उसको आप बॉईल करके फिर उसको आप कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सिरप में छोड़ देते हैं, ताकि वो एकदम बहुत अच्छे से स्वीट हो जाता है. and that is how a candy is made. फिर sulfuring, this is the process of fixing color of fruits and vegetable to preserved by drying. अक्सर ऐसा होता है ना, after drying you will see the color gets changes. तो sulfuring is a process जिसमें कि हम कलर को फिक्स करने के लिए we add sulfur, जो ईटेबल सल्फ़र होता है वो ऐड किया जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, टू बी प्रिजर्व बाय ड्राइंग. बिफोर ड्राइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सक्लूडिंग अनियंस एंड ग्रीन्स को इसमें हम नहीं एक्सक्लूड करते हैं सल्फरिंग में. दे आर एक्सपोज टू सल्फर फ्यूम्स, और फिर जिसको भी हमें प्रिजर्व करना है, दे आर बीइंग एक्सपोज टू सल्फर फ्यूम्स फॉर अबाउट 1 to 6 hours. उसको 1 से 6 घंटे तक सल्फर फ्यूम्स में क्या कहते हैं के साथ एक्सपोज कर देते हैं, सो दैट दे कलर में बी फिक्स्ड.
उसका कलर फिक्स हो जाता है. एंड दे मे नॉट स्पॉइल ड्यूरिंग द ड्राइंग पीरियड. और साथ ही साथ इसलिए उसको पहले फ्यूम्स के थ्रू उसका कलर फिक्सेशन करते हैं, सो दैट उसका जो है वो क्या कहते हैं, वो जो ख़राब ना होए, स्पॉइल ना हो ड्यूरिंग द ड्राइंग पीरियड. दिस डन इन चेम्बर्स और कैबिनेट स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पज़. और ये जो है चेम्बर्स और कैबिनेट में करते हैं, स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पज़. एडिबल सल्फर फ्री फ्रॉम इंजूरियस सब्सटेंसेज इज यूज. अब वही सल्फर हम यूज़ करते हैं जो एडिबल है एंड फ्री फ्रॉम, यू विल नॉट गेट इन्फेक्टेड, या कोई इंजरी नहीं होगी अगर आप ये वाला सल्फर यूज़ करेंगे विच इज़ एडिबल. Then salt curing. Salt curing is a preliminary to candy making and pickling. Candy making या pickling के पहले हम salt curing करते हैं. What is the salt curing? This helps to soften the fruits and vegetable. ये क्या करते हैं, fruits और जो vegetables है इसको soft कर देते हैं. The cut fruits are kept submerged in various concentration of salt solution for varying length of time. आपने ये भी देखा होगा ना कि जब आप पीस की ब्लांचिंग करते हैं तो आप यू लीव दैट इन सॉल्ट वाटर फॉर सम टाइम एंड देन यू टेक आउट एंड कीप इट फॉर ड्राइंग. हियर what happens, the cut fruit is kept submerged in various concentration of salt solution. जो फ्रूट्स आपको क्या कहते हैं सॉल्ट क्योरिंग करना है उनको आप सबमर्ज करते हैं वेरियस सॉल्ट सोल्यूशन में और वेरियस लेंथ ऑफ टाइम, और सबका लेंथ ऑफ टाइम इज़ डिफरेंट. स्टार्टिंग फ्रॉम 2% सॉल्ट सोल्यूशन, हम जो सॉल्ट सोल्यूशन में सबमर्जिंग करते हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम 2% सॉल्ट सोल्यूशन एंड इंक्रीज बाय 2% एवरी थर्ड डे, और हर थर्ड डे पे 2% इंक्रीज करते हैं टिल 8% कॉन्सेंट्रेशन इज रीच. और जब तक वो 8% कॉन्सेंट्रेशन रीच करता है. द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू बी क्योर्ड आर केप्ट सबमर्ज्ड इन द सोल्यूशन फॉर 7 to 20 days. और फ्रूट्स और वेजिटेबल जिसको कि हमको सॉल्ट क्योरिंग करना है दे आर बीइंग सबमर्ज्ड इन द सोल्यूशन फॉर 7 to 20 days टिल द फूड इज़ फाउंड रेडी फॉर पिकलिंग और कैंडी मेकिंग. जब तक कि आप देखेंगे कि जो फूड आइटम है जिसका आपको कैंडी या पिकलिंग करना है आर दे रेडी फॉर दैट और नॉट. पिकलिंग ब्लांच्ड वेजिटेबल्स आर कवर्ड विथ सॉल्ट ऑयल एंड स्पाइसेस. जो पिकलिंग हम करते हैं, पिकल्स बनाते हैं, उसमें क्या कहते हैं ब्लांच वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं. ब्लांचिंग इज़ व्हाट kept in salt solution for a longer period of time and then we take out and then we do the drying part. Okay, so here is the food preservative lesson, and here the pickle making process is there, and then recipes for preservation of fruits and vegetables. Go through these recipes nicely, that how they are being made. Orange marmalade and orange squashes and so many other things are here. Lime pickle and mango pickle. Go through these recipes nicely and know how they are being made. And also I am giving a assignment for you. Please read the question nicely and please do it in your register in which you have done the adulteration wala question also. Okay children, so I hope this chapter is clear to you all. In case anything is not clear, please come up with your question and let me know what you have not understood. Okay, the question is explain food preservation and why it is important, and then explain the causes of food spoilage, methods of preserving foods, use of preservatives, and methods of commercial food preservation. We are getting 3, 4, 5 days holidays. Do this assignment, and from next after the holidays we'll continue with the next topic, whichever topic is there in your book. I'll just see what topic is there. I think I'll take food preparation. So come prepared with food preparation, read and come, and then we'll continue with the topic. Okay, thank you children, enjoy your holidays.